एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, अबाउट वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स जो कि टाइम टू टाइम आते रहे, एंड ऑल्सो अबाउट लाइट। सो ऑन दैट नोट, लेट्स बिगिन। सो अ क्विक रिविजन टू व्हाट वी ऑलरेडी नो। सो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये बोलती है कि एटम्स वो पार्टिकल्स हैं जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, which means they are the smallest particle which can ever exist if you keep on dividing matter. But क्या ये चीज सच थी? We'll find that out. बट कहने का मतलब ये था कि कोई भी एलिमेंट अगर हो, गोल्ड पर से, सिल्वर पर से, तो उसके एटम्स सेम होंगे, सेम वेट के होंगे। बट इफ वी कंपेयर द टू डिफरेंट एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स, लेट्स से इफ आई कंपेयर द एटम्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर टुगेदर, तो वो डिफरेंट होंगे आपस में। दिस इज व्हाट द एटॉमिक थ्योरी और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हैड टू से। But the question is, are atoms really indivisible? Well, the answer you and I both know is no. The atoms actually are further divisible and they divide into electrons, protons and neutrons. अब ये तीन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्योंकि ये पार्टिकल्स है इवन स्मॉलर देन एटम। ओके, बट ये जो चीजें हैं अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये आपको और मुझे आज पता है, राइट? बट साइंटिस्ट को बहुत टाइम पहले, जब कुछ आइडिया ही नहीं था इस सबका, तो हाउ डिड दे कम टू नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल दीज? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहले तो एक बेसिक थंब रूल याद रखो। आई थिंक इट्स वेरी कॉमन, सबको पता ही होगा पहले से, दैट लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक ऑलवेज अट्रैक्ट। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, वेयर इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो ये बहुत बेसिक फंडा है, आई थिंक सबको ऑलरेडी इसकी नॉलेज होती है। यू नो, आई जस्ट वांटेड टू से दिस बिफोर आई स्टार्ट ऑन विद व्हाट इज द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट था, आई वुड से अ वर्ल्ड क्लास एक्सपेरिमेंट था, जिसके बाद हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन नामक चीज भी एग्जिस्ट करती है। सो इन दैट एक्सपेरिमेंट व्हाट वी डू इज, हम एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लेते हैं, एक ग्लास ट्यूब लेते हैं, और उसके अंदर हम एक गैस को फिल करते हैं। आप मुझे बताओ, इस गैस अ कंडक्टर और एन इंसुलेटर? ऑफ कोर्स हवा में अगर गैस एक कंडक्टर होती तो हमको जगह जगह पे शॉक लग रहा होता, राइट? बट दैट इज नॉट हैपन, सो विच मीन्स गैस एक इंसुलेटर है। बट हमने जब इस गैस को फिल किया इनटू दी ग्लास ट्यूब दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, और हमने उसको एक बहुत ही लो प्रेशर पे फिल किया और बहुत ही हाई वोल्टेज लगाई, देन वी फाउंड आउट कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही थी। यानी कि कुछ तो कंडक्टिंग था उसके अंदर, उस गैस के अंदर। तो वो कंडक्टिंग पार्टिकल क्या था? दैट इज व्हाट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हिच वी नो टुडे। सो इस कंडक्शन का रीजन क्या था? इट वाज फाउंड आउट कि कुछ पार्टिकल्स और बीम ऑफ पार्टिकल्स वर बीइंग एमिटेड फ्रॉम द कैथोड, जो कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होती है, एंड इट वाज मूविंग टुवर्ड्स द कैथोड। नाउ वी बोथ नो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है, राइट? सो ऑफ कोर्स ये नेगेटिव कहाँ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ जाएगा, एंड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होती है एनोड। तो ऐसा दिख रहा था कि कोई पार्टिकल्स हैं जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं, एंड बिकॉज दे वर, इट वाज लुकिंग एज इफ वो कैथोड से निकल रहे हैं, दीज वर कॉल्ड एज कैथोड रेज, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल दिस अ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ऑल्सो ऐसा फाइंड आउट किया गया कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी थे जो एनोड से निकल के कैथोड की तरफ जा रहे थे, एंड ऑफ कोर्स क्योंकि वो एनोड से कैथोड यानी कि नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब उनका चार्ज पॉजिटिव रहा होगा, राइट? बिकॉज हमने थंब रूल स्टार्टिंग में समझा ही है। सो दीज वर कॉल्ड द प्रोटॉन्स। देन ऐसा देखा गया कि ये जो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ये सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, हर गैस में एग्जिस्ट करते हैं, इनफैक्ट हर एलिमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, और इनको बोल दिया गया सब एटॉमिक पार्टिकल। इसके बाद भी बहुत सारी रिसर्चेस हुई जिसमें साइंटिस्ट वर ईगर टू फाइंड आउट द मास एंड द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड देन रियलाइज हुआ कि समथिंग जस्ट डजंट ऐड अप, कुछ तो ऐसा है जो मिस आउट हो रहा है, और इसीलिए डिस्कवरी हुई द अनचार्ज पार्टिकल और सब एटॉमिक पार्टिकल, द न्यूट्रॉन। बिकॉज ये अनचार्ज था इसलिए सबसे लास्ट में डिस्कवर हुआ, बिकॉज इसको पहचानना थोड़ा मुश्किल था। बट देन इट वाज रियलाइज that the atom is not only divisible, but it is divisible into three subatomic particles, which is the electron, the proton, and the neutron. If I sort of summarize this, I can say कि electrons, protons, and neutrons होते हैं subatomic particles, having the charge of -1, +1, and 0 respectively, and also their masses. If you look at the table, you will realize कि electrons का mass बहुत कम है compared to that of your protons and neutrons, और protons and neutrons का आपस में almost similar है. Okay, this is something which you have to little bit memorize, but okay. So now we know that atom is having subatomic particles. अब मैं तीसरी बार बोल रही हूँ, but it is electrons, protons and neutrons. But the question is,
हाउ आर दीज पार्टिकल्स अरेंज्ड इनसाइड एन एटम. अब एक एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है, बट वो पड़े कैसे हुए हैं एटम के अंदर. ओके, हाउ आर दे इवन प्रेजेंट इनसाइड द एटम. दैट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द साइंटिस्ट. एंड अब आई बहुत सारी थ्योरीज. थ्योरीज क्या होती हैं? थ्योरीज होती है जिसमें कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होता, ये सिर्फ आइडियाज होते हैं जो साइंटिस्ट पुट फॉरवर्ड करते हैं. तो सबसे पहला आइडिया था बाय Thomson, and he gave the first model of atom, which was the Thomson model of atom. So the first ever idea was put forward by the scientist J.J. Thomson, and he gave the first ever model of atom, which was the Thomson model of atom. So what he was saying, I think कुछ गलत नहीं बोल रहे थे, because अगर हम लोग को बता दिया जाता कि एक एटम है, उसके अंदर 3 पार्टिकल्स पड़े हैं, उसको अरेंज कर दो, so I think हम भी ऐसा ही करते. So what he did was he kind of compared the atom with that of a watermelon or a plum pudding. I think ये words हमने बहुत बार सुने हैं, but this is what he actually did. And he thought that the positive charge is actually a spherical thing. Okay, it's a massive or a spherical thing, और negative charge उसमें embedded है, just like raisins in a plum pudding or seeds inside the watermelon. This is what the entire idea of this model was. But ये model ने सब कुछ गलत. Of course we know that this was rejected after some time, but सब कुछ गलत नहीं था. एक पॉइंट था जो बिल्कुल सही था, which is electroneutrality. This model of atom was, not contradicting the electroneutrality, यानी कि एटम जो है वो न्यूट्रल है. Of course, एटम्स हमारे पास चार्ज तो नहीं होते ना, बिकॉज अगर हम चार्ज होते एटम्स हमारे अराउंड तो हमको कुछ भी कहीं पे भी करंट लग रहा होता, which is not true. So again, atoms are electrically neutral, and this was something which was in line with the J.J. Thomson model of atom. But this model of atom was very well rejected, और इसके बाद आया हमारा Rutherford model of atom. Well, Rutherford had this idea, जो J.J. Thomson idea देके गए थे, which was that atom actually is a sphere, एक massive sphere है, उसके अंदर electrons embedded हैं. So Rutherford had a very normal idea कि ठीक है, अगर वो एक massive sphere है of positive charge और उसमें अगर electrons embedded हैं, तो अगर मैं उस पर कोई particle छोड़ता हूँ, so what will happen is that particle will actually jump back. पार्टिकल उसके थ्रू नहीं चला जाएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स एटम है, कोई भूत थोड़ी ना. सो दिस इज व्हाट वाज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट. एंड ही एक्चुअली डिड समथिंग दैट ही टुक एटम्स, ओके, और वेरी थिन गोल्ड फॉइल, बिकॉज वो कुछ एटम्स ही थिक थी, एंड ही एक्चुअली बोम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन टू दैट गोल्ड फॉइल. उसके बाद जो हुआ, वेल वो तो हिस्ट्री है. लेट्स फाइंड आउट कि क्या हुआ. एक्सपेक्टेड तो यही था कि एक्चुअली जो भी पार्टिकल जाएगा वो वापस आ जाना चाहिए, वो गो थ्रू तो नहीं करना चाहिए एटलीस्ट. ओके, सो दिस व्हाट यू सी ऑन योर स्क्रीन इज द सेटअप फॉर द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल एमिटर लगा हुआ है, जहां से ऑफकोर्स अल्फा रेज निकलेंगे, अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, एंड ऑफकोर्स वो पास करेंगे 2 स्लिट से, एंड इट विल रीच द गोल्ड फॉइल, जो कि हमारा मेन एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, जो कि कुछ 1000 एटम्स थिक होने वाला है. ओके, एंड पीछे लगा हुआ है डिटेक्टर. तो यानी कि अगर कोई भी अल्फा पार्टिकल पास थ्रू कर गया, जो कि एक्सपेक्टेड है नहीं वैसे, बट अगर पास थ्रू कर गया तो इट विल बी प्रेजेंट ऑन द डिटेक्टर, वहां पे शो हो जाएगा. बट अगर नहीं करा, जो कि एक्सपेक्टेड ही है क्योंकि नहीं करना चाहिए, जे थॉमसन जी बोल के गए थे कि नहीं करेगा, तो इट विल बाउंस बैक. नाउ लेट्स सी व्हाट एक्चुअली हैपेंड. बट जब एक्चुअली एक्सपेरिमेंट हुआ, इट वाज ऑब्जर्व कि जो रिजल्ट्स थे वो कंप्लीटली ऑपोजिट थे देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड. अल्फा पार्टिकल्स, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स were actually passing through the gold foil, और बहुत ही कम were actually deflected back at small angles, और बहुत ही कम, उससे भी बहुत कम were deflected back at 180 degree. यानी कि something was missing out, and this experiment was the basis of the Rutherford model of atom. So to explain the experimental results, it can be said कि क्योंकि हमारे maximum alpha particles were passing straight through the gold foil, it means कि atom के अंदर most of the space is just empty, which is contradicting to what J.J. Thomson said, because उन्होंने बोला था कि atoms massive होते हैं, positively charged evenly distributed होता है, which is not true. Second thing is that क्योंकि हमारे बहुत कम ऐसे particles थे जो deflect हुए थे but at certain angles, वो इसीलिए हुए थे बिकॉज जो सेंटर है इट इज पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एंड पॉजिटिव रिपेल. तो जो डिफ्लेक्शन एट सर्टेन एंगल्स हुआ था वो ड्यू टू रिपल्शन हुआ था. एंड थर्ड थिंग इज दैट बिकॉज वेरी लेस अमाउंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री. दिस मीन्स क्योंकि ये जो सेंटर है, ये जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, ये बहुत छोटा है, बिकॉज ऐसे बहुत कम पार्टिकल्स थे जो डायरेक्टली इस पे आके 180 डिग्री कम बैक हुए. ओके, so to conclude, the Rutherford model of atom basically said
कि हमारा मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एंटायर एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ द एटम और द पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी एंड कॉल्ड दैट न्यूक्लियस. He also said that electrons are actually revolving around the nucleus at very high speeds in their defined orbits. Also, he said ये electrons और protons जो हैं वो साथ में इसलिए हैं because they are attracting each other by electrostatic forces of attraction, and this was the entire theory of the Rutherford model of atoms. He actually also compared the structure of atom to that of our universe. जैसे हमारे different planets revolve around the sun in circular orbits, वैसे ही electrons revolve around the nucleus in circular orbits. So basically electrons आराम से revolve कर रहे हैं around the nucleus. But एक question था जो किसी बहुत ही दिमाग वाले इंसान ने पूछा होगा, that electrons are what? They are charged particles. और कभी भी कोई charged particle अगर accelerate कर रहा होगा तो it is definitely going to lose its energy. ठीक है, तो अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एट अ सर्टेन स्पीड, ओके, इट इज ऑफ कोर्स एक्सेलरेटिंग क्योंकि वो सर्कुलर मोशन में है, राइट. तो इसलिए विद लूजिंग इट्स एनर्जी एट सम पॉइंट इट इज गोइंग टू स्पाइरल इनसाइड द न्यूक्लियस, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो न्यूक्लियस के अंदर ही घुस जाएगा, एंड दैट इज व्हेन द वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड एंड एटम्स आर नॉट गोइंग टू बी स्टेबल. बट दैट ऑल्सो फॉर्चुनेटली नेवर हैपेंस. तो कुछ तो बात थी जो थोड़ी सी मैचअप नहीं हो रही थी, right? So that is why the Rutherford model of atom was also rejected. So let's continue with our regime, which is answering the question at the end of each topic. तो यहाँ जो question है ये बहुत simple है, but it is one of the previous years. So let's understand the question क्या बोलना चाह रहा है. The question says Rutherford scattering experiment is related to the size of. Options हैं आपके nucleus, atom, electrons and neutrons. Well, I think it's very very obvious. बहुत देर से बोल रही हूँ कि हमारा एटम है, उसके बीच में एक छोटा सा बट पॉजिटिवली चार्ज सा सेंटर है जिसका नाम है न्यूक्लियस, और वो बहुत छोटा है. ओके, सो द वर्ड छोटा इज रिलेटेड टू साइज एंड ऑफ कोर्स द पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इज द न्यूक्लियस. तो हमारा रदरफोर्ड मॉडल है बेस्ड ऑन द साइज ऑफ न्यूक्लियस. सो द आंसर इज ऑप्शन ए. तो बहुत डिफिकल्ट नहीं था, आई थिंक बहुत आसान था. सो ये सारे थे डिफरेंट मॉडल ऑफ एटम जो टाइम टू टाइम आते रहे और ऑफ कोर्स रिजेक्ट भी होते रहे बिकॉज दे हैड सर्टेन प्रॉब्लम्स जो कि सॉल्व नहीं हो पा रही थी. Finally, we have the next model of atom, और वो पढ़ने से पहले we have to realize how scientists perceive the world around us. Scientists used to think कि हमारा जो world है is made up of two things, matter and energy. Okay? अब ये जो दो चीजें हैं matter और energy, matter of course everybody knows, everything that you can see, feel, touch, basically everything around you is matter. So matter जो होता है it is made up of particles और discrete particles. इसीलिए हम बोलते थे या साइंटिस्ट बोलते थे that matter has a particle nature. But then what about energy? Well, energy has a wave nature, okay, which is of course different than a particle nature. तो अगर हम बोल रहे हैं कि हमारी waves particles से मिलके नहीं बनी है, then what is the component which is okay comprising these waves? किससे मिलके फिर ये waves बनी है? Well, the answer to that was कि हमारी ये जो energy की waves होती हैं, they are made up of electrical and magnetic fields which are perpendicular to each other and to the direction of propagation of the electromagnetic radiation or the energy. तो हमारा जो भी waves हैं, जो भी energy की waves होती हैं, these are made up of electrical and magnetic fields which are perpendicular to each other, and this kind of radiation was called an electromagnetic radiation. So पहले मैंने word use किया energy, फिर मैंने word use किया electromagnetic radiation, और अब मैं वर्ड यूज करने वाली हूँ लाइट. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज थ्री? लेट्स अंडरस्टैंड. तो हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ है जिसमें वी इफ वी हैव सनलाइट एंड वी पास इट थ्रू अ प्रिज्म, वी सी अ बैंड ऑफ डिफरेंट कलर्स, जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट. एंड बेसिकली इसका मतलब इतना होता है कि हमारे सनलाइट और वाइट लाइट के अंदर ये सारे कलर्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो वेल ये सबको पता होता है, बट इसके आगे और पीछे क्या? So basically अगर तुम सनलाइट को स्प्लिट करते हो, इट्स ट्रू दैट यू विल सी ऑल दीज कलर्स, बट कुछ ऐसा भी होगा, कुछ ऐसा भी निकल रहा है स्प्लिटिंग के बाद जो तुम्हें दिख नहीं रहा है. ओके, सो ऑल दीज कलर्स विच यू सी, यू कॉल देम लाइट बिकॉज यू कैन सी देम, बट इसके ऊपर और नीचे और भी डिफरेंट रेडिएशंस निकलती हैं विच ऑफ कोर्स यू कैन नॉट सी. तो इस पूरे स्पेक्ट्रम को इंक्लूडिंग द वंस विच यू कैन सी विच इज लाइट, और इसके ऊपर और नीचे और डिफरेंट रेडिएशंस विच यू कैन नॉट सी, दिस एंटायर स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इसके ही वेव नेचर की यहाँ पे बात हो रही है. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड ये ऊपर और नीचे कौन सी ऐसी रेज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हमें दिख नहीं रही है. ओके,
Well, look at that. जो विजिबल रीजन है जिसको हम लाइट बोल रहे थे वो एक छोटा सा रीजन है फ्रॉम 400 to 700 नैनोमीटर वेवलेंथ एंड दैट्स ऑल. उसके आगे और पीछे इतनी सारी और रेडिएशन है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था बिकॉज वेल यू कैन नॉट सी दैट. Starting from we have gamma rays, we have X rays, we have ultraviolet rays, and then we have that teeny tiny visible region, and then we have infrared rays and finally radio waves. तो ये सारी जो waves हैं ये सब exist करती हैं in the white light or the sunlight, okay, and all these form the electromagnetic spectrum जो कि हम लोग आज पढ़ रहे हैं और इन सब का wave nature होता है. Okay, so let's try to understand this wave nature a little more in the next slide. So if I talk about any general wave, there is a mean position जिसके ऊपर और नीचे वो wave travel करती है. Okay, so the maximum distance जो वो ऊपर और नीचे travel करती है, that distance is called the amplitude. Okay, and also you can see कि वो एक maximum point achieve करती है. Okay, and एक minimum point भी achieve करती है. So the maximum point it achieves is called the crest, and the lowest point it achieves is called the trough. The distance between two consecutive यानी कि एक साथ crest या फिर two consecutive troughs is called the wavelength. तो ये बहुत basic definitions हैं about any kind of wave. I think तुम्हें पहले से पता होंगी, but I think it's better if we just clarify things ahead. And the second most important feature is called the frequency of a wave. The frequency is the number of oscillations or the number of wavelengths it creates in पर यूनिट टाइम. अब ये पर यूनिट टाइम 1 सेकेंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, वट एवर वी स्पेसिफाई, राइट, बट उतने टाइम में उसने कितनी वेव्स क्रिएट करी, दैट इज द फ्रिक्वेंसी. तो अगर ये मेरा डिस्टेंस है या मेरा टाइम है, इसमें ये सिर्फ एक वेव क्रिएट कर पा रही है, दैट इज हैविंग अ लेस फ्रिक्वेंसी आई कैन से. और अगर इतने टाइम में ये बहुत सारी वेव्स क्रिएट कर पा रही है तो इट इज हैविंग अ हायर फ्रिक्वेंसी वी कैन से, राइट. So the waves which have higher frequency, which means उतने ही टाइम में अगर वो ज्यादा wavelengths क्रिएट कर रही है, we say that the wave is having a higher energy also, मतलब बहुत energetic wave है वो, ठीक है. Whereas if that wave is having a less frequency, यानी कि उतने ही टाइम में वो कम wavelengths क्रिएट कर रही है, then we say it is a less energetic wave क्योंकि वो बहुत कम wavelengths क्रिएट कर पा रही है. Well, this is not a very scientific explanation because I need to give you a formula here. But क्योंकि हम लोग chronological order में चल रहे हैं और formula अभी तक आया नहीं है, so I won't talk about the formula as of now. But अभी तक बस इतना समझो कि अगर किसी wave की frequency बहुत ज़्यादा है, so it is going to be a higher energetic wave. और अगर frequency कम है, so it is going to be a less energetic wave. Now let's do a comparison. Here we have two waves. One is the orange one and the other one is the blue one. Okay. As you can see, the orange one is having a higher frequency because उतने ही time में it is creating more wavelengths, right? So of course उसकी energy ज़्यादा है, right? And the second is it is having less frequency, तो उसकी energy definitely कम है. So energy और frequency का relation तो sorted है. Second thing जो हम notice नहीं कर रहे हैं यहाँ पे वो ये है कि let's talk about their wavelengths. As you can see, ऑरेंज वाली जो वेव है उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है, ठीक है, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने वाली है तो ऑफकोर्स वेवलेंथ तो छोटी रह जाएगी ना, बिकॉज उतने ही टाइम में कवर करनी है. सो इट्स क्लियरली विजिबल कि हमारी ऑरेंज वाली जिसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी उसकी वेवलेंथ कम है, whereas the second one which is having a lower energy and lower frequency is having a higher wavelength. So now we have a relationship between energy, frequency and wavelength. एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, राइट, बट ये दोनों ज्यादा तो वेवलेंथ कम. दिस इज एन रिलेशनशिप ऑर्डर जो हमें समझ में आ गया. नाउ देयर इज अ थर्ड फीचर जो हमें पता होना चाहिए किसी वेव के बारे में, विच इज कॉल्ड द वेव नंबर. वेव नंबर इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ. तो आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर. फॉर्मूला से समझ में आ गया कि जो भी रिलेशन वेवलेंथ के साथ होगा किसी भी फीचर का, उसका उल्टा रिलेशन होगा वेव नंबर के साथ, बिकॉज दे आर जस्ट रेसिप्रोकल टू ईच अदर, राइट. सो नाउ वी हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो कि आई थिंक बहुत ज्यादा काम आने वाला है किसी भी क्वेश्चन में. मतलब ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आएंगे जब वी डोंट हैव टू इवन राइट द फॉर्मुलाज एंड डू द मैथमेटिक्स, वी कैन जस्ट लुक एट द वैल्यूज एंड गिव द आंसर. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप विच वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट energy and frequency are proportional. So higher frequency means higher energy and I think ये तो हमें पहले से पता था, right? Third one is the wavelength. तो अगर higher energy है और higher frequency है तो of course wavelength कम होगी, ठीक है, that we have discussed already. And the fourth one is the wave number. As I already said,
वेव नंबर का रिलेशन बिल्कुल उल्टा होगा जैसे वेवलेंथ का था, तो अगर वेवलेंथ कहीं पे कम है तो वेव नंबर वहां पे ज्यादा हो जाएगा, राइट, बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो क्लब अप कौन हो गए? एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर आर प्रपोर्शनल टू ईच अदर, indirectly proportional to the wavelength, right? So higher frequency means higher energy, means higher wave number, means lower wavelength, and vice versa. So this is a very very important relationship. If you have not understood this, I think just recap the video and try to understand it, even more, क्योंकि इससे related बहुत questions आते हैं, and trust me, sometimes you don't even have to actually do the mathematics. You can just look at the values and give the answers. तो ये relation please अच्छे से memorize करो, actually समझो, because memorize करने में ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, तो please do that. अब ये जो फॉर्मूला है स्क्रीन पे, इसको थोड़ा समझते हैं, which says C is equal to F into lambda, where C is the speed of light, F is the frequency of the light, and lambda of course is the wavelength of the light. ठीक है, तो ये सब चीजें, हाँ, ये सब मैंने इनके नाम बताए क्या क्या है. सो बेसिकली हमने जितने भी सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़े थे, ओके, इंटरेस्टिंगली इन सब की जो स्पीड है इन वैक्यूम, इट इज सेम, which is 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड चेंज नहीं होने वाली है. ठीक है, स्पीड तो इतनी ही रहेगी, तुम जितना भी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के साथ खेल लो, बट स्पीड ऑफ द लाइट और जब भी मैं यहाँ पे लाइट बोल रही हूँ, आई मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, राइट. So the speed of the light is going to be constant throughout, which is 3 into 10 to power 8 meter per second. Just memorize it. Alright. So इस फॉर्मूला को अगर मैं ध्यान से देखूं, तो अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू which is the C, ठीक है, इसको मुझे अगर कांस्टेंट रखना है, this C is equal to a product of two things which is F and the lambda, right? तो अगर मुझे इस साइड को कांस्टेंट रखना है, तो मैं इस साइड के दोनों वैल्यूज के साथ जितना मर्जी प्ले करूं, ये इफेक्ट नहीं होना चाहिए. Which means कि अगर मेरा इन दोनों में से एक चीज बढ़ती है, कि फ्रीक्वेंसी लेट्स से अगर बढ़ रही है, तो दूसरे वाले को which is the lambda which is the radius, उसे कम होना पड़ेगा, right? और ये इनवर्स रिलेशन तो हम लोग पढ़ के ही आए हैं, that frequency and wavelength are indirectly proportional, तो यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा. Okay, so this formula is also just a proof of this relation. तो यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो लैम्डा कम होगा, और अगर फ्रीक्वेंसी कम होती है तो लैम्डा बढ़ेगा, because on the left hand side we have this value of C, which is the speed of light or electromagnetic radiation, which is constant, which is 3 into 10 to power 8 meter per second. Now we come to the best part, which basically says, and I assure you that nobody is ever going to ask you the specific wavelength or frequency of any of these radiations. कोई नहीं पूछेगा यार कि visible की radiation की wavelength कितनी होती है या frequency कितनी. At least in all the big competitive exams, even in your boards, nobody will ask you the exact frequency या wavelength. Okay, what they can ask you is the comparison. They can give you two values and they can tell you कि कौन सी IRP है या कौन सी माइक्रोवेव की है और कौन सी UV visible की है. You tell us. Okay, then how do you do that? You can see, as you can see, the electromagnetic spectrum जो तुम्हारा है, it starts from the gamma rays, then you have X rays, then you have ultraviolet, then you have visible, which is the light that you all know, then you have infrared, then you have microwave, and finally you have radio wave, right? But ये ऐसे सबको याद नहीं होता है. And as you can see, radio waves की, you can see it has such a high wavelength, so it is having low frequency, low energy, and gamma rays, as you can see, इसकी बहुत ही ज़्यादा कम wavelength है, so it is having a higher frequency and higher energy. But ये याद करने के लिए we have a mnemonic, and well, congratulations to all of you. किसी को भी ये पूरा याद करने की जरूरत नहीं है. The mnemonic basically is Robert Miller is visiting Uncle Xavier's garden. R as in, it starts from the highest wavelength, so it starts from R up there. So R as in Robert, as in radio wave, M as in Miller, as in microwave, I as in infrared, V as in visible, as in visiting here, okay. Then U as in uncle, as in ultraviolet. Then X as in Xavier's, as in X-ray, and garden, G as in garden, as in gamma rays. तो ये एक न्यूमोनिक है जो तुम याद कर सकते हो to memorize the entire spectrum. तो questions करना थोड़ा आसान हो जाता है इससे. So let's practice the question and understand कि कितना समझ में आया. So the question basically says, which by the way is the previous year question, okay, which basically says the decreasing order of wavelength of infrared, microwave, ultraviolet and gamma rays is. ठीक है, तो ये क्वेश्चन कोई भी वो बच्चा अटेम्प्ट करेगा जिसको पता होगा कि पूरी स्पेक्ट्रम याद होगी. ठीक है, तो तभी तुम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट.
तो अभी तो हमने याद करी, right? We have an entire mnemonic to understand that. जो I think very clear है हमें all of us. तो अगर हम लोग options में देखेंगे, we have the last option in which we have M, I, U and G, which is microwave, infrared, ultraviolet and gamma. So my friends, the answer is option D. Okay. So I think this is quite clear and this is very, very helpful for our questions. Thank you so much for watching this video. If you have liked it, then I think that's a good day for me. And please do head off to EduRev, practice the test, read the notes and stay tuned for more.